गुड मॉर्निंग एवरीवन। लाइव स्ट्रीमिंग आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? बताएंगे फटाफट से। अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो जल्दी जल्दी बताओ आवाज आ रही है क्या? हाउ आर यू पीपल डूइंग? कैसे हो आप लोग? Okay, so yes, let's start. Welcome back to Akash Agarwal classes, and yes, your CMA Intermediate December 2025, your Vishwas series, that is practice batch. जल्दी जल्दी फटाफट से लाइव आएंगे, फटाफट से अपने फ्रेंड्स को शेयर करने का काम करेंगे और वीडियो को लाइक करने का भी काम करेंगे। जल्दी 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 से। How are you people doing? So here is your day 1 जहां पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 11 दैट इज डेटा एनालिटिक्स के राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। So अगर हम लोग जाएंगे आगे, अगर आप लोग देखेंगे, ये है आप लोगों का विश्वास सीरीज सक्सेस बैच सीजन 8 दिसंबर 2025 के लिए सीएमए इंटरमीडिएट का टाइम टेबल। सो दिस इज योर टाइम टेबल, जहां पे आज हम लोग मिले हुए हैं ग्रुप 2 के डेटा एनालिटिक्स के लिए, वे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर राइटिंग प्रैक्टिस। कंप्लीटली पूरा राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। कैसे क्वेश्चंस को आप लोगों को लिखने का काम करना है, कैसे क्वेश्चंस को आप लोगों को प्रेजेंट करना है, ये हम लोग देखने वाले हैं इस राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। प्लस उसी के साथ साथ अगर आप लोग आगे जाएंगे, मेन लेक्चर के बाद आप लोगों का रहने वाला है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का लेक्चर, जो लेने वाले हैं हमारे प्रोफेसर चैतन्य सर, जहां पे आप लोग सेम तरीके से एसएम का राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। 1 बजे आप लोगों का रहने वाला है राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ एसएम। उसके बाद फ्रॉम 29 हम लोग चालू करने वाले हैं हमारे ग्रुप 1 के सेशन के साथ, जहां पे आप लोग आपका ये टाइम टेबल देख सकते हो। मंडे ट्यूसडे अकाउंट्स रहने वाला है, फिर उसके बाद टैक्सेशन मंडे ट्यूसडे को ही रात में 9 बजे रहेगा। उसी के साथ साथ वेडनेसडे थर्सडे को आपका बिजनेस लॉ रहने वाला है 7 बजे, एंड फ्राइडे सैटरडे को रहेगा कॉस्टिंग 7 बजे विद आर श्रुति मैम। तो ये आप लोगों का पूरा टाइम टेबल है। पूरा टाइम टेबल आप नोट करके रखेंगे, आपने देखा रहेगा कि आपने करा रहेगा। उसी के साथ साथ यस बच्चा लोग, आप लोगों को एक चीज करनी है, दैट इज आप लोगों को गूगल फॉर्म भरने का काम करना है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड नहीं हुए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जल्दी जल्दी ऐड हो जाएंगे, सो दैट मेनी मोर अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। प्लस गूगल फॉर्म याद से फिल करना, राइट। सो स्टार्ट करेंगे हमारे सेशन के साथ। दिस विल बी एक्सक्लूसिवली ओनली अ राइटिंग प्रैक्टिस, एंड वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ डेटा एनालिटिक्स। क्या यस, तो भूलेंगे नहीं। जिन्होंने भी नहीं करा हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे, गूगल फॉर्म भी भरने का काम करेंगे, एंड मेनी मोर अपडेट्स लेने का काम करेंगे। सो शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन के साथ। वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर। अगर आप लोग देखेंगे, आप लोगों को आपके डेटा एनालिटिक्स में टोटल मिला के है बेसिकली 4 चैप्टर्स। टोटल मिला के आप लोगों को 4 चैप्टर्स रहने वाले हैं। प्लस ऑल्सो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो हम लोगों ने क्या करा हुआ है, ये 4 चैप्टर्स का डिवीजन करा हुआ है, एंड इट विल बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू दी वेटेज वाइज, जो आप लोगों को ध्यान में देना है। ये आपका पेपर नंबर 11 रहता है। जो आपका पेपर नंबर 11 रहता है उसके अंदर आपका एफएम रहेगा, डीए रहेगा, राइट। एंड अगर आप लोग देखेंगे, जो डेटा एनालिटिक्स है आप लोगों को ये आता है वैसे 20 मार्क्स के लिए, बट देन अगर आप विथ ऑप्शन जाएंगे तो आप लोगों को आएगा ये 27 मार्क्स के लिए। 20 मार्क्स के लिए रहता है वैसे, बट देन यस आप लोगों को विथ ऑप्शन आने वाला है 27 मार्क्स के लिए। अगर आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ने का काम करेंगे, डेटा एनालिटिक्स का जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ने का काम करेंगे, तो डेफिनेटली आप आराम से अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हो। जहां पे
3 एमसीक्यूज आपको आते हैं डेटा एनालिटिक्स के, राइट। उसके बाद जब हाथ में पेपर आता है आपको कुछ और इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं है डेटा एनालिटिक्स के क्वेश्चन को। आप लोगों को बस क्या करना है, जाना है डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2B पे, जो आपका रहेगा डेटा एनालिटिक्स का। क्वेश्चन नंबर 2B पे जाना है जो आपका रहेगा डेटा एनालिटिक्स का। और ज्यादा करके ये जो चैप्टर का क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन आप लोगों को आएगा। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन आप लोगों को आएगा। प्लस ऑल्सो यस, ये जो पीडीएफ है जो हम लोग राइटिंग में लिखने वाले हैं ये आप लोगों को मिलेगी हमारे आकाश अग्रवाल क्लासेस के एप्लीकेशन के ऊपर। आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी रही है जहां पे आपको बस कोर्स को परचेज करने का काम करना है। और जैसे आप कोर्स को परचेज करने का काम करेंगे आप लोगों को ये पीडीएफ उसके अंदर मिलेगा, राइट। तो जो भी अपना राइटिंग प्रैक्टिस रहने वाला है पूरे आंसर्स के साथ, क्वेश्चन प्लस आंसर्स के साथ आप लोगों को वो पीडीएफ आपके कोर्स के अंदर मिलने का काम करेगा। एंड यस, क्वेश्चन नंबर 2B आपका रहेगा डेटा एनालिटिक्स का चैप्टर नंबर 4। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आएंगे पेपर पे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। ये भी क्वेश्चन नंबर A एंड B ये भी आपका डेटा एनालिटिक्स का क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसे 3 क्वेश्चंस जो 7 मार्क्स के लिए आते हैं, दैट इज 21 मार्क्स के लिए आप लोगों को रहने वाला है। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग आज देखने वाले हैं दैट इज इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस। इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस। यस यस यस, आप लोगों को और कुछ नहीं करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। एंड लेट्स गो विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा इन फाइनेंस एंड कॉस्टिंग। तो सब लोग अपने हाथ में नोटबुक के साथ पेन के साथ तैयार रहेंगे। तो हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे लिखने के साथ। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज जो आप लोगों को आया हुआ है आपके सामने, दैट इज टाइप्स ऑफ डेटा इन फाइनेंस एंड कॉस्टिंग। द वेरी फर्स्ट थिंग जो आप लोगों को लिखना है आपके पेपर के अंदर, दैट इज सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन। मैं बस बता रही हूँ आपको पेपर कैसे लिखना है। सबसे पहले क्या आने वाला है, इंट्रोडक्शन। तो एक बार यार चैट बॉक्स में बताएंगे सब लोग तैयार है क्या? आर वी रेडी एवरीवन? जल्दी जल्दी बताने का काम करेंगे, क्या हम लोग तैयार है क्या? yes, are we ready? रेडी एंड यस, एक बार वापस से बता देती हूँ, आपको जाना है एप्लीकेशन में, आपको कोर्स सेक्शन में जाना है। हमारा S8 का इंटरमीडिएट का कोर्स बना हुआ है, उसमें जाएंगे, उसको परचेज करेंगे और परचेज करने के लिए और कुछ नहीं करना है। इट इज ओनली एंड ओनली फॉर 1 रुपीज, 1 रुपए का कोर्स है। आपको बस एनरोल करना है और सारी जो आगे के हमारे पूरे नोट्स रहने वाले हैं वो आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट्स के आप लोगों को नोट्स जैसे भी प्रोवाइडेड रहेंगे एज पर द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट आप लोगों को इसके अंदर मिलने वाला है। एंड याद से, ध्यान से, वापस से बोल रही हूँ, गूगल फॉर्म भरने का काम करेंगे। ऑल्सो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, बहुत सारे अपडेट्स आते रहेंगे उसके अंदर। ओनली एंड ओनली 1 रुपीज कोर्स को परचेज करेंगे। डन। तो होपफुली आप लोग रेडी हो, आप लोग रेडी। गूगल फॉर्म भरना मत भूलेंगे, वापस से बोल रही हूँ, गूगल फॉर्म भरना मत भूलेंगे। सबसे पहले आप लोगों का जो आने वाला है वो आएगा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जो आने वाला है वो आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज नथिंग बट यस, जो डेटा रहता है वो रॉ डेटा रहता है, तो साथ में लिखने का काम करेंगे। Data plays a very important role in the study of finance and cost accounting. Data plays a very important role, यहाँ पे important आएगा, very important role in the study of finance and costing, right? डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन पूछा है, जो कौन सा क्वेश्चन पूछा है, फिनेंस एंड कॉस्टिंग। फिनेंस एंड कॉस्टिंग ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे 2 टाइप ऑफ डेटा आप लोगों के लिए रहने वाले हैं, राइट? फर्स्ट विल बी योर द काइंड्स ऑफ डेटा used in finance
and costing may be क्वांटिटेटिव और दूसरा रहेगा क्वालिटेटिव. मे बी क्वांटिटेटिव, दूसरा रहेगा क्वालिटेटिव. द वेरी फर्स्ट प्रेजेंटेशन ऐसे ही रखना है, एग्जाम में भी प्रेजेंटेशन ऐसे ही रखना है. क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल डेटा. By the term quantitative data, we mean the data expressed in numbers. We mean the data expressed in numbers. और उसके बाद आप ये पूरा पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखेंगे. यहां पे आप लोगों को पॉइंट वाइज जाने की कोई भी जरूरत नहीं है. ये पूरा का पूरा किस में लिखने वाले हो आप? पैराग्राफ में लिखने वाले हो. ठीक है. द क्वांटिटेटिव डेटा अवेलेबिलिटी in finance is significant. Example. Also, जहां पे एग्जाम्पल लिख सकते हो वहां पे आप लोगों को एग्जाम्पल्स लिखने हैं, वो याद रखना. जहां पे जरूरत है वहां पे एग्जाम्पल्स को लिखने का काम करेंगे. स्टॉक प्राइस डेटा, financial statements, etc. ये सारी चीजें किस में रिप्रेजेंट की जाती है? नंबर्स में रिप्रेजेंट की जाती है. राइट. ये था तुम्हारा क्वांटिटेटिव. सेकेंड है तुम्हारा क्वालिटेटिव फाइनेंशियल डेटा. क्वालिटेटिव फाइनेंशियल डेटा. Some data in financial studies may appear in qualitative format. जिसने भी पढ़ा रहेगा उसको ऑब्वियसली याद आता रहेगा ये सारी चीजें एक एक करके. राइट. These types of data may be very useful for financial analysis as it is completely a descriptive data. Right. Example. Qualitative format may be in the form of text, video, audio, etc. ठीक है. डन. नेक्स्ट इसी के अंदर लिखेंगे दिस इंफॉर्मेशन is useful for getting an insight
into the performance of the business. डन एवरीवन. तो ये है तुम्हारा टॉपिक जो तुम लोगों को ध्यान में देना है. यहीं पे डेटा खत्म नहीं होता है, बट दीज आर दी टू टाइप ऑफ डेटा. वन इज योर प्राइमरीली फाइनेंस एंड कॉस्टिंग के अंदर फर्स्ट इज योर ऑब्वियसली व्हाट वी से फर्स्ट इज योर क्वालिटेटिव डेटा, और सेकंड तुम्हारा कौन सा आया, क्वांटिटेटिव डेटा आया. सेकंड तुम्हारा कौन सा आया, क्वांटिटेटिव डेटा आया. राइट. गोइंग फॉरवर्ड आगे हम लोग जाएंगे, आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों का उसी के अंदर कंटिन्यूटी में जो आने वाला है वो है there are more types of data. There are more types of data. The first is financial data. The first is financial data. First is financial data. कौन से types of data आएंगे? Balance sheet. Second, income statement. Third, cash flow statement. Third is your cash flow statement. Financial data, balance sheet, income statement, cash flow statement. Second will be your market data. अगेन 3 टाइप ऑफ डेटा यहां पे आएगा. सबसे पहला आएगा स्टॉक प्राइस, इंटरेस्ट रेट्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. वापस से याद दिला रही हूं आप लोगों को 1 रुपीज का कोर्स परचेस करना है और यही नोट्स आप लोगों को पूरे हैंड रिटन के मिलने वाले हैं 1 रुपीज के कोर्स के अंदर. दैट इज इन योर एप्लीकेशन. नेक्स्ट आने वाला है तुम्हारा थर्ड टाइप ऑफ डेटा, दैट इज कॉस्ट डेटा, जहां पे आएगा प्रोडक्शन कॉस्ट, और ये सही सही ऐसे का ऐसा ही लिखना है. सेकेंड आएगा तुम्हारा लेबर कॉस्ट, सेकेंड आएगा लेबर कॉस्ट. नेक्स्ट आएगा ओवरहेड्स, नेक्स्ट आएगा ओवरहेड्स. Fourth, budgetary. Planned expenditure. Actual financial performance. Actual financial performance. I am just hoping कि आप लोग साथ में लिख रहे हो मेरे. Customer and sales. First is your sales figures. Customer behavior, and demographics, and demographics, and demographics. Done. Additionally, there are more 4 types of data. First is your nominal, second is your ordinal, third will be इंटरवल. इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को लिखना है, इन लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. राइट, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट एनीवे. एंड लास्ट है आप लोगों का रेशियो.
लास्ट है आप लोगों का रेशो, और यहाँ पे हम लोगों ने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हम लोगों ने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पे करवाने वाली हूँ, और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को एक हाथ दो जो क्वेश्चन मेरे को लगते हैं कि जरूरी है वो आप लोगों को मैं होमवर्क पे देने वाली हूँ। तो आप लोगों को वो क्या करना है, रिवाइज करके लेने का काम करना है। ठीक है, डन। तो यहाँ पे तुम्हारा ये फर्स्ट चैप्टर होता है, फर्स्ट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनेंगे क्या क्वेश्चन में लिखा है। Why do we digitize? It is not how. It is not how. It is why. It is why. It is not how. It is why. Right? सबका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, लिखते आ रहा है, याद आ रहा है, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। लेट्स गो आगे, लेट्स गो आगे। वाई डू वी डिजिटाइज, तो अगेन यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, अगेन हम लोगों को यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन लिखना है, बट यू डोंट हैव टू राइट इंट्रोडक्शन, डायरेक्टली स्टार्ट करने का काम करना है आप लोगों को। बहुत ईजी है ये, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। लेट्स गो। डिजिटाइजेशन implies, digitization implies the process of लिखते लिखते 27 मार्क्स को याद रखो बस, और कुछ भी नहीं। कन्वर्टिंग डेटा and information from analog to digital format, from analog to digital format। नहीं बेटे, from analog to digital format। Done? Clear? There are two basic objectives of digitization। मैम ऑब्जेक्टिव्स क्यों लिखने हैं, लिखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे आप लिखेंगे व्हाई डू वी डिजिटाइज, राइट। सो यू विल हैव टू राइट द ऑब्जेक्टिव्स। तो देयर आर टू ऑब्जेक्टिव्स। First is provide a access of data and information to a very large group of users. To a very large group of users. Next, second, it helps in preservation of data for a longer period. For a longer period. Just a second, just a second. Yes, 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 yes. Yes, hopefully अब आपको दिख रहा है। Done, 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 guys, done. Example, the very big project. MCQ में भी आ सकता है तुम लोगों को। One of the largest digitization project, one of the largest digitization project taken up in India is unique identification number. That is UID. Or in our language called as Aadhaar.
MCQ. Mark it as MCQ. Done. Now here are the benefits. Or reasons for why do we digitize? Why do we digitize? Why do we digitize? Improves classification. And indexing for documents. This helps in retrieval of records. This helps in retrievals of records. Second, digitize records. Digitize records may be accessed by more than one person simultaneously. मोर देन वन पर्सन साइमल्टेनियसली. मैं जिस चीज को मार्क कर रही हूं, आप लोग आपके एग्जाम के लिए अगर वो लर्न अच्छी तरीके से करेंगे तो आपको स्टेटमेंट फॉर्मेशन सही से आ जाएगा, राइट? इसलिए मैं आप लोगों को मार्क करवाने का भी काम कर रही हूं. इट बिकम्स easier to reuse the data. Which are difficult to reuse in present format. Which are difficult to reuse in present format. Done. Everyone, are we done? Next point. Fourth point. Helps in work processing. Helps in work processing. Next, higher integration with business information system. Higher integration with business information system. Easier to keep backup files. And retrieval during any unexpected disaster. Yes, and as already informed, ये आप लोगों के लिए तभी काम में आएगा जब आप लोगों का पढ़ के हुआ है, तो ये राइटिंग सेशंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं.
can be accessed from multiple locations through networked systems. Through networked systems. Through network system. मैम सारे पॉइंट्स लिखने हैं क्या? इसलिए तो लिखवा रही हूँ, सारे पॉइंट्स लिखना जरूरी है आपको. इंक्रीज्ड स्कोप फॉर rise in organizational productivity. And the very last point of this answer is requires less physical storage space. और अगर मैं यहाँ पे तुम लोगों को मार्क करवाऊंगी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके, तो एक्सेस मल्टीपल लोकेशंस, स्कोप फॉर राइज इन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी एंड लेस फिजिकल स्टोरेज, क्योंकि ये आप लोगों को मतलब ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है ये तुम लोगों को एमसीक्यू में आ सकता है, या फिर इसके ऊपर का एमसीक्यू में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटाइजेशन और विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस ऑफ डूइंग डिजिटाइजेशन. तो तुम लोगों को एमसीक्यू में भी तुम लोगों को ये पॉइंट्स आ सकते हैं. तो एमसीक्यू के लिए भी आप लोगों को ये आंसर को अच्छी तरीके से पढ़ के लेना है. तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को कर लिया है कंप्लीट. राइट, आप लोगों को भी बिलीव नहीं होगा कि आप लोगों ने इतने क्वेश्चन को कंप्लीट करके लेने का काम किया हुआ है. 2 क्वेश्चन को पूरा का पूरा हम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से लिखा है. ये तुम्हारा प्रेजेंटेशन मेथड रहने वाला है. आप लोगों को आपके एग्जाम में ऐसे ही लिखना है. प्लस अगर आप लोगों को टाइम मिलता है पूरा पेपर होने के बाद अगर आप लोगों को टाइम मिलता है तो आप लोगों को बस और कुछ नहीं करना है. जैसे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मार्क करे हुए हैं उसको आप लोग बस अंडरलाइन करने का काम कर सकते हो. ऑल्सो और एक चीज मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को, आपके अगर ध्यान रखने के लिए मतलब एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे यही प्रेजेंटेशन मेथड रहेगा, लेकिन एग्जाम के टाइम पे अगर आप लोगों को चीजों को याद रखना है तो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसको आप लोग क्या कर सकते हो, याद रखने का काम कर सकते हो. ठीक है, समझ में आया क्या आप लोगों को? आर वी डन? इज इट क्लियर? लाइव स्ट्रीमिंग वालों एक बार फटाफट से बताएंगे सो दैट आई कैन स्टार्ट विद द वेरी थर्ड क्वेश्चन. तो वेरी थर्ड क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करने का काम कर सकती हूँ. एंड ये सब देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे वापस से है स्केड्यूल, जहाँ पे आप लोगों का डीए होने वाला है, एसएम होने वाला है, राइटिंग प्रैक्टिस होने वाली है. साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे मंडे से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप 1 के सेशंस के साथ, जहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस होने वाले हैं आपके पूरे के पूरे, अकाउंट्स हो, टैक्स हो, कॉस्टिंग हो या लॉ हो. डन? Let's go to the very next question. That is question number 3. Transformation of data to relevant decision, relevant information. ये तो भाई तुम लोग LDR मार्क कर लो. मेनी टाइम्स एक्सपेक्टेड वाला क्वेश्चन रहता है ये. अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये आप लोगों को आया हुआ है आपके दिसंबर 2023 के MQP के सेट 2 के अंदर. फिर आप लोगों को ये आया हुआ है दिसंबर 2023 के पास्ट पेपर में ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन. उसके बाद अगर आप और एक चीज देखेंगे तो दिसंबर 2024 में भी MQP के सेट 2 में आया हुआ है क्वेश्चन. मतलब अगेन 7 मार्क्स के लिए, वो तो हम लोगों को पता ही है. बट देन LDR क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर नंबर 1, द वेरी LDR, बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये वाला एक जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है, पूरा का पूरा LDR रहने वाला है. सो शुरुआत करते हैं हमारी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ. योर इज योर थर्ड क्वेश्चन. लेट्स गो with the introduction point. There is a strong emergence of analytics that supports a more intensive
data centric and data driven information generation and decision making process to make the data turn into user-friendly information it should go through 6 core steps. It should go through 6 core steps. The very first is collection of data. The very first is collection of data. The collection of data may be done with standardized system in place. Standardized system in place. Appropriate software and hardware may be used for this purpose. May be used for this purpose. Let's go. Appropriate. Just a second. Appointment of trained staff also plays an important role. Also plays an important role in collecting accurate and relevant data. In collecting accurate and relevant data. Done. Second. Organizing the data. The raw data needs to be organized in an appropriate manner to generate relevant information. ये भी तुमको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना. इट इज अ पॉइंटर्स वे में है, लेकिन ये तुम लोगों को पूरा पैराग्राफ जैसे ही रखना है, उसको कुछ ऊपर नीचे करना मत, याद से ध्यान में रखना. The data may be grouped manner. एक मिनट.
to generate. The data may be grouped, arranged in manner that create useful information. Third, data processing. Data needs to be cleaned to remove the unnecessary elements. If any data point is missing, or not available, that also need to be addressed. यहाँ पे हमारे कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए हैं और 6 स्टेप्स है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है और अपने को आगे के स्टेप भी लिखने का काम करना है. जस्ट अ सेकेंड, लेट्स गो. 4th पॉइंट, इंटीग्रेशन ऑफ डेटा. Integration of data. It is the process of combining data from various sources into a single unified form. This step includes creation of data. The steps include creation of data network sources, और मास्टर सर्वर. एमसीक्यू के लिए ये आ सकता है, ध्यान में रखेंगे. एमसीक्यू के लिए तुम लोगों को ये आ सकता है. प्लीज एवरीवन ध्यान में रखने का काम करेंगे, बिल्कुल भी भूलने का काम नहीं करेंगे. एंड यूजर्स एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम master server. Done? Everyone done? एक बार बताएंगे यार, everyone done? हो गया क्या? लिखा गया यहाँ तक? चलो let's go. Next point, 5th point, data reporting. पहले कलेक्ट करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर स्टोर करेंगे, प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद रिपोर्ट करेंगे, एंड देन यू विल यूटिलाइज द डेटा दैट इज यूज द डेटा. सो डेटा प्रोसेसिंग, डेटा रिपोर्टिंग stage involves, data processing stage involves translating the data into consumable format. To make it accessible by the users.
Done. Last point of this question. Data utilization, the very last step. The ultimate step data has been utilized to back corporate activities and enhance operational efficiencies and productivity for the growth of business. For the growth of business. For the growth of business. This makes corporate decision making really data driven. This can also come for MCQ plus ये question आप लोगों को वापस से एक अलग तरीके से MCQ में पूछा जा सकता है. That is, which of the following are the steps of converting your data into useful information? या फिर ऐसा पूछा जा सकता है, which of the following is not a step of converting data into user friendly information? So we are done with the 3 questions. यहाँ पे हम लोगों ने 3 questions को आज लिखने का काम करा हुआ है. एक बार फटाफट से बताएंगे क्या ये 3 questions जो हमारे हुए हैं ये आप लोगों को पूरी तरीके से रिलेटेबल हो गए हैं क्या? अगेन सेइंग दिस विल बी रिलेटेबल ओनली फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने ये पढ़ा हुआ है पहले. तो फटाफट से बताने का काम करेंगे. आर वी डन विद दिस टॉपिक? 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट करे हुए हैं. 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट करे हुए हैं. फटाफट से बताएंगे. चलो. ऑल्सो रिमाइंडिंग यू अगेन, जिन्होंने भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं अभी तक ऐड हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे. उसी के साथ साथ आप लोगों को गूगल फॉर्म, आई एम टेलिंग यू, गूगल फॉर्म इज कंपलसरी. मेक श्योर दैट यू फिल योर गूगल फॉर्म. अगर आप लोगों ने गूगल फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो गूगल फॉर्म फिल करने का काम करेंगे, प्लस ऑल्सो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे. ये 3 चीज आपको प्री रिक्विजिट करनी ही करनी है. और उसी के साथ साथ आपको कोर्स भी परचेज करना है 1 रुपीज का. सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. डू फॉलो द स्केड्यूल एज वेल. सो दीज आर द 3 थिंग्स मैंडेटरीली यू हैव टू डू. कंपलसरी है. सबके लिए है क्या मैम? हाँ, सबके लिए है. ये कोई इधर वेज में नहीं है, ये सबके लिए रहने वाला है. एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग जो करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी है जो आप लोगों के लिए रहने वाला है आपका होमवर्क. दिस विल बी अ होमवर्क फॉर यू. ये आप लोगों के लिए रहने वाला है आपका होमवर्क. मिस नहीं करना है आप लोगों को ये होमवर्क को, राइट? ये आप लोगों का होमवर्क रहने वाला है. दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी डिसीजन मेकिंग. आप लोगों को ये लिखना है. ध्यान से लिखेंगे, याद से करके लिखेंगे. ऐसा ना हो कि यही दिसंबर में ये क्वेश्चन आ जाए करके. सो एक लास्ट क्वेश्चन है जिसके बहुत छोटे पॉइंट्स हैं. दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4 और ये जल्दी लिख के हो जाएगा. मैनेजर शुड नेवर टेक एन इंपॉर्टेंट एनालिसिस एट फेस वैल्यू. सो लेट्स गो. A deeper understanding of hidden insights that lie underneath the surface of the data set need to be explored. And what appears on the surface
should be looked with some प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ऑडिट में भी देखा हुआ है अपन लोगों ने, याद रहेगा तुम लोगों को। दाल में कुछ काला होना, दाल में कुछ काला होना। The emergence of new data analytics, the emergence of new data analytics tools and techniques and financial environment allows the accounting and finance professionals to gain unique insights into the data, but at the same time creating very unique challenges while exercising skepticism. Second, major concern about the use of data analytics is the likelihood of false positives. ऑल्सो आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है, ये भी एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को पूरा सेम यही आंसर लिखना है. इवन दिस कैन बी द क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम्ड एंड आस्क्ड टू यू पीपल. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, studies show that frequency of false positives increase proportionately with size and complexity of data. Fourth point, skepticism is an important focus area for practitioner researchers regulators and standard setters. The very last point. So it is important to identify and understand condition in which the finance and audit professional
should apply professional skepticism. Right? So here are the 5 major points of this topic, this particular question. तो हम लोगों ने वापस से बोल रही हूँ 4 questions complete कर लिए. अगर आप देखेंगे 55-56 मिनट्स में हम लोगों ने 4 questions को पूरा अच्छी तरीके से प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में लिखने का काम किया हुआ है. प्लस ऑल्सो 4 क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया हुआ है. क्या क्वेश्चन है आप लोगों का? कम्युनिकेशन ऑफ information for quality decision making. Just want to say that quality information leads to quality decision making. तो easy question है ये भी. आप लोगों को ये question आपके घर पे लिखने का काम करना है. हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए. दैट इज आप लोगों का 1 बजे रहने वाला है SM का राइटिंग प्रैक्टिस. राइट? एंड ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे. हर चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस को लिखने का काम करेंगे इन अ प्रेजेंटेबल फॉर्मेट. होपफुली आप लोगों को ये सेशन हेल्पफुल था. एंड मेक श्योर करेंगे कि आप लाइक करेंगे वीडियो को. ऑल्सो आप कमेंट करने का भी काम करेंगे वीडियो को कि कैसा लगा आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेशन. सी यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव, कीप स्टडीइंग, बाय बाय.